जाते हैं. So that is very important. Okay, I will request dipintidubey to introduce our guest tonight, Sri Dinesh Pancholi ji. Over to you, Dipinti. Thank you. Hi, hello everyone. Good evening, everyone. A warm welcome to all the photography enthusiasts and member and guests who have joined us today for 62-second DDC photo webinar. This is organized by the Dhanbad Camera Club. Actually, today's webinar features a very special presentation on the topic Heritage of Gujarat and Rajasthan. And I also like Gujarat city. Yeah, we are honored to have with us renowned photographer and designer in this evening, whose work beautifully captures the architecture's heritage of India. Okay, now let's begin the evening. My introduction. I am Dipintidubey and I am very thankful to Dhanbad Camera Club for giving me this a very big opportunity to introduce our honorable guest in the evening. Frankly, I am very feeling humble and I am very happy inside. Okay, now the wait is over. It is my pleasure to introduce Mr. Dinesh Pancholi. Mr. Dinesh Pancholi Dinesh Pancholi was born in 1943. Hello, sir. Welcome. And he is renowned interior designer and photographer. After completing his BCom, he has been working as an interior designer for more than 45 years. That's great. That's great work you have done. Or I want to say something, especially Mr. Dinesh sir. After completing my 10th, I want to also become an interior designer. Yeah. But because of our Dhanbad town, there is not much more exposure of this area, so I have to leave. Okay, now let's. Along with this professional work, Mr. Pancholi, he discovered photography as a creative medium. Through photography, he expresses the beauty of Indian heritage, architecture, temples, and state wells. Mr. Pancholi has traveled widely across India and also abroad to capture landscape, memento, and architecture heritage. Okay, this is very unique about Sir. And also he has received many national awards for his photography. He has also organized several solo exhibitions, including exhibitions on North Indian landscape, South Indian landscape, and the heritage of Gujarat. In recognition of his contribution to art and photography, he was honored with the Gaurav Puruskar by Lalit Kala Academy, Government of Gujarat for year 2016 to 17. We are truly honored to have such an experienced and inspiring photographer with us today. Welcome, sir, and again welcome, sir. Now I would hand over the session to Mr. Mukeshsrivastava, sir, the president of the Dhanbad Camera Club, for further proceeding. Sir, now stage is yours. Thank you. Thank you, Dipinti. Done very well. Thankful to you. Now, friends, I'll share my screen first to give a visual introduction of Dinesh Pancholi sir, so that he will be able to know his caliber in the art photography. Just wait for a moment. I'm sharing my screen. Share screen. Just hold for a minute.
Is my screen visible to all of you? Yes. Yes, sir. Yes. So, Yes, sir, yes. yes. So actually, Dhanbad Camera Club is very fortunate to have such an artist who started his professional career as interior designer, and now he is using photography for the help of in interior designing. And once you see his work on the heritage temples, monuments, you will be able to know that within his heart, that interior decoration technique is being seen in form of the photograph. Excuse me, Mukesh, could you make that full screen? Oh, full screen, yes, sorry. Thank you. Thank you. Full screen, sometimes. नीचे है सर, नीचे के वो में. आ गया? Now it's Thank you. visible? Yeah, free screen. Much better. Yes, yes. Yeah, yes. much better. And for his work in Gujarat mainly, also he has worked a lot in Rajasthan, Leh Ladakh also. But for his work in Gujarat, he was honored very prestigious honor, that is the Gaurav Puraskar Award from the government of Gujarat in 2023. This is his receiving the he's presenting his heritage book, coffee table book, to the Chief Minister Sri Bhupendra Bhai Patel. And here he's presenting his coffee table book, heritage of North Gujarat, to nephew Rio of Nagaland. He is a Chief Minister. And this is the coffee table book. And I think I too have a copy of that. So I'm really very fortunate enough that I got a presentation from Dinesh Pancholi sir. And it is really a treasure for me. Then comes is another book on Shekhawati Havelis. Although practically I belong to Rajasthan, but still I have not seen all those Havelis what he has photographed. And that book is wonderful. So this is before opening up the solo exhibition on Shekhawati Havelis at JKK Jaipur. He presented the book on Shekhawati Haveli to Honorable Deputy Chief Minister of Rajasthan, Diya Kumari ji. And this is the book on Shekhawati Havelis, legacy of Shekhawati Havelis. And once he will show his presentation, you will be able to see a lot. But just to give some feeling about his work, I am showing you some of his photographs which I have selected myself. So this is Atlas Stepwell from Gujarat. Again from Gujarat. This is actually Rani Ki Vav means stepwell. Okay, so this is the stepwell in Patan, Gujarat. This is erotic, wonderful lighting. And that's all. Pancholi Saab, let me stop the sharing. I have some questions from you for the benefit of the participants and me also. I have seen your lot of photographs. Okay. First question is, what type of lens you prefer? Because this will be benefited to all the participants. Pancholi Saab, over to you. For capturing monuments, what type of lens you use? I am using 15 to 30 Tamron, that is wide. And Okay. secondly, for mirrorless, 24 to 70. Sometimes I am using 2.8 lens. All are 2.8 lens. Okay, fine. Very good. Very good. Thank you very much. आपका इको आ रहा है आपके वॉइस में.
आपकी आवाज में इको आ रहा है पीछे से. क्योंकि मेरा वो माइक बराबर ठीक नहीं है ना स्पीकर, ओके, तो कोई मैंने बात नहीं. मोबाइल भी चालू किया है. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगला क्वेश्चन है कि एज आई नो बिकॉज आई डिड माय फोटोग्राफिक एजुकेशन इन लाइफ एंड लाइट एकेडमी ऊटी. So there I have seen कि for capturing monuments and temples, they use huge number of lights. Maybe for capturing a temple, covering complete temple, I have seen using more than 50 strobe lights to capture the complete temple with well illumination. I have seen your photographs, and every photograph is well illuminated. So, what kind of lighting technique you have used? No, this is lighting department. Okay, They okay, have okay. done only. Okay. That's why the illumination is It's a permanent lighting over there. okay. Fine. That's very good. And thank you very much. One more thing, because in such architectural photography, sometimes you find a very huge tall building monument. Okay. So whatever lenses you have described, including Tamron, I think 1530, it is a wide angle lens. So will it solve your purpose of capturing very high rise monuments? No, that is a different thing because of this. I am keeping distance Okay, to take a high okay, thing like that or fine. Thank you. So, Pancholi Sahab, to all of us also, I will share my experience. Normally, I use a fisheye lens, that is 1017, because sometimes when there is a huge monument, you will not get enough space to move to and fro. So you have to be as close as possible, and then you have to use very super wide angle lens, likewise fisheye lens. Anyway, thanks very much. Now I will request Lisa, are you here? Yes, you are here very well. So Lisa, I will request you to honor our guest tonight, Dinesh Pancholi sir, with the distinction of DCC, that is Excellence DCC. Over to I you. will do that. So Can you allow me to share? Let me permit you to share your screen. Just I forgot it. Yes, you have been made co-host. You can share your screen. Perfect. Let's see. Can you see my screen? Yeah, it is visible. Okay. All right. Well, it is my pleasure on behalf of Don Bod Camera Club as honorary advisor to honor you with the Certificate Excellence DCC. And I'll read this. This certificate is proudly presented to you, Dinesh Pancholi, for your outstanding and exceptional contribution and services in the field of photography. It's a beautiful certificate designed by Mukesh, and it is signed by the secretary and president on this 14th day of March 2026. We're looking forward to your presentation and really appreciate your time. Thank you, Lisa. Thank you very much, and we are very much happy, Pancholi sir. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Yeah. Lisa, you can stop sharing. My great pleasure. Yes. Now, another important event we are going to see. Actually, we work very hard to format and design almost 60 pages bulletin every quarter. And Lisa Snelger helps me a lot in proofreading to the extent of full stop, comma, hyphen, space, and what. And so she right hand for editing. Please unmute yourself. Mahira. Wait, I will unmute him. Okay, fine. It's done.
There is a very so much hard work behind preparing the bulletin of Dhanbad Camera Club every quarter. Earlier we used to have it every month. So I have tried a lot of people to release the bulletin, but the way our chief advisor Anil Vishal Singh sir releases, nobody else could do it till date. Although Lisa has done once, I too have done once, but it is really our privilege and we are proud of our chief advisor Anil Vishal Singh sir. Now I'll request sir to you to release our bulletin. Just now I will give you sharing option. Yes, you can share your screen, sir. Thank you, Mukeshji, for giving me this opportunity to release the bulletin. And please give me a little time, sir. Sure, sir. Please carry on. And really, it is a pleasure and honor to release the bulletin of Dhanbad Camera Club. And this is the 40th issue. And for the month of March 2026, to have a full look. Cover page you have already seen. Then I will come to the next page. Please enlarge. Yes. Yes. It will be better to enlarge it. Now, I think it is fine now. Okay, fine. So the next page is having the different contents where these contents are, page number, etc. And you all know this is the executive body of Dhanbad Camera Club, having the picture and the names. And a very dedicated team is behind the Dhanbad Camera Club, working tirelessly. And this page is having President's message, and points mentioned here will be discussed in the following pages. And the achievements of the different members of Dhanbad Camera Club, as my name starts with A. So to begin with my achievements, these are my forms and color experimentation images used by the Jaipur camera clubs. And recently we have a 12th Himalayan landscape photographic workshop. I was one of the mentors there. And now Lisa Slanzer's achievements, awarded 4-star Exhibitor Award for the merit by the Photographic Division of the Photographic Society of America. Hearty congratulations, Lisa, for this remarkable achievement. And this is the certificate, friends. And then Mr. Sitanath Paul is the best author in 3 salons. He got 6 gold, 1 silver, 9 HM, and 3 others. Very well going, Mr. Paul. Yes. Heartiest congratulations. And these are the images on which he must have got the awards. Yes, Very nice. Yes, sir. These are gold awarded. Yes. And then now comes the President's achievement. Mr. Mukeshsrivastava conducted the photo workshop for DCC members on colors of holy theme. And these are some press clippings on this workshop on Holi. So this is how the club is responsible for encouraging the members and educating them on any particular theme holding the workshops. Now, Mr. Rupak Sinhas, he was honored by Art and Culture Department of Government of Bihar and Zilla Prasashan Gaya. Heartiest congratulations, Mr. Sinha. And this is the coverage of the media so that the other people may also know
about the achievements of the members of Dhanbad Camera Club. And now we all know we are having our guest today, Mr. Dinesh Pancholi from Ahmedabad. He's a great friend of mine, a great architectural photographer and a great designer. And on behalf of the Dhanbad Camera Club and on my own behalf, I welcome Mr. Dinesh Pancholi ji for this talk on the given subject. And we are looking impatiently to see your wonderful architecture pictures of Gujarat and Rajasthan. And our next webinar, which will be on 13th June 2026 at 7 p.m. as usual. And the topic is very interesting. AI in photography, challenge and concerns. And it's a very burning topic of today and very well known. Foreign and Indian photographers will be participating in it. And I'm very sure it will be very, very helpful to know about this particular subject. Now, DCC photo workshop, theme colors of Holi. 3 models were there. MS Urvi Sharma, MS Dipintidubey, and MS Rashi Saw. And as I have already told, that mentor was Mr. Mukeshsrivastava. So some of the images of this workshop, the following page of this magazine will be showing. Holi, the festival of colors. The joy and happiness representing by the different colors. That is all about the Holi. Quite many photographs of this workshop. Models are in different moods, having joy and happiness. Now, the next permanent column of this bulletin is exhibiting 4 photographs of the different members of Dhanbad Camera Club. My first image. This is the second one. And these 2. So these all photographs were taken during the workshop at Kausani the last month. And these are the pictures of the Lisa Slenzer, a beautiful nature study. Wonderful. I love this picture very much, Lisa. Thank you. Appreciate it. Another one of the same species of animal. Third picture, and this is the final 4th picture by Lisa. The design. Very nice. Now, Mr. Mukeshsrivastava's the recent experimentation is taking off. Images extracted from the bark of the tree. Very nice abstracts. It is not easy to visualize such images. 2 more on the same theme. Mr. Sitanath Paul's images. The monochrome study.
All three are the portraits. And this is the final one. This is also a portrait. Anyway, Mr. Rakesh Kishore Sai is another member of Dhanbad Camera Club, more interested in nature and wildlife. And other two images of Mr. Sai. Now, Mr. Sukanta Ghosh. It is always interesting to see the fellow members' work. Used to inspire, and a lot of things may be learned by seeing others' images. So very educative to learn the new things from other members. Mr. Rupak Sinha's two images. This is the interior of the monastery, and this is the outer of the monastery. Now, Mr. Prakhar Mittal's two images must be taken during the workshop on Holi. Now, Mr. Dinesh Pancholi's two images and other two images showing the gaiety of the festivals, of Indian festivals. Now, Mr. Mahesh Kanawat's two images, two different images of the landscapes. And now the cultural aspect or heritage aspect of the place. Now, Mr. Prasanta Kumar Das images. Two monochrome portraits or Mr. Prasanta Kumar Das and Mr. Akhil Hardia from Indore, who is also a member of Dhanbad Camera Club. Two different images. Other two images of Mr. Akhil Hardia. And Mr. Sudeep Roy's. Wow. Another very interesting nature study. Very nice. Mr. Amit Shah. These are the two images by him. Mr. Deepak Thakur's images. And now, friends, these are the details about the different webinars by the different authors organized by the Dhanbad Camera Club. And I think today we are having the 62nd workshop by Mr. Dinesh Pancholi. So I again welcome Mr. Pancholi. And this is the membership registration form of the club. If anybody is interested, fill the form, pay the fees, and become the member of very active photography club, that is Dhanbad Camera Club. And this is the DCC bulletin. Just click to download the different webinars of DCC. And this is the last page, the back cover. Picture is by Mr. Ajay Singh. And here I conclude. And I stop sharing my screen and handing over to Mukeshji. Over to Mukeshji now. Thank you very much, sir. My pleasure always. Yeah. I think I'm looking very dark. Give me some just a minute to resolve it. Anyway, let it be dark. It's difficult to do it. You cannot minimize. That's the problem. Yes, Kapoor Sahab, welcome. Sir, how are you? Hosani Naresh ki jai ho.
आपकी आपके जय आपके बिना जो हमारा वेबिनार है ना हमेशा अधूरा रहता है। अधूरा ही नहीं, बहुत सुना सुना सा लगता है। आपके आने से रौनक आती है और बुरांस की खुशबू आती है। चलिए। सो बीच में कुछ दिन फंस जाता था तो मैं मिस नहीं कर पाता। हाँ, आपका आपका तो थैंक यू सर। आप कभी मिस नहीं करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड सो हैप्पी। नाउ द time has come and we are awaiting anxiously for this time. Now Dinesh Pancholi he will present his can say highly illuminated with full details and everything the art photography of heritage and monuments. So over to Dinesh Pancholi sir. Let me share the screen to you for let me permit you to share your screen. Yes, now you can share your screen, Pancholi sir. Yeah. First of all, let me thanks to given an opportunity in this webinar. Dhanbad Camera Club, thank you very much. This is my first coffee table book I have published. जस्ट ए मिनट पंचोली साहब, थोड़ा सा वेब कैम से थोड़ा सा पीछे हट के बात कीजिए। आपका आधा चेहरा कट जा रहा है। हाँ, ये ठीक है। ठीक है? हाँ, ये दीजिए। ऑल राइट। This is my first coffee table book. तो ठीक है, स्वीट कॉर्न I would like, it was my aim to publish this heritage among the people, to know the value of this our Virasat heritage. That's why I have taken this step and published a coffee table book on heritage of North Gujarat. It was not published at all before that. So I decided. And secondly, my native is also, I am staying over there in my childhood. So it was my duty to give some homage to my motherland. That was the main aim. And people at least know what is our heritage, what is our history. That's why this is my first attempt on heritage on North Gujarat. Your voice is muted. Okay, so like that. हाँ, आ गया, आवाज आ गई। Heritage through my eyes. Heritage is more than old buildings. It is our identity, our history, and our culture memory. The heritage structure of North Gujarat and the beautiful Havelis of Shekhawati are not just architectural forms. They are stories carved in stone and painted on walls. They reflect the art, tradition, and lives of past generations. I love heritage photography because it allows me to preserve these stories through my lens. Many of these structures are slowly fading with time, and photography becomes a way to document, celebrate, and protect their beauty. For me, capturing heritage is not just about taking pictures. It is about honoring history and keeping it alive for future generations. This was my aim. Now I shall start my photography journey. Yes, please. First, I start with this Adalat Stepwell. Known actually, his name is Rudabai Stepwell. Rudabai Stepwell as at Adalat district Gandhinagar, located on Ahmedabad Kalor Road. Near entrance of Adalat village
was built in somewhat 1555 AD 1498 by Ruda, a wife of Vaghela, Chief Virasima. This is recorded in Sanskrit inscription on a marble slab set into the niche in the first story of eastern side. Octagonal shaft is the 5-storied. It is upper 4-story are entered through the spiral staircase on western and eastern side. The corridor railing around octagonal shaft, pillars, pilaster, and entablatures, lintels, and other architectural members are profusely decorated. A panel showing 9 panels, that is Navgraha, is fixed over a door in secondary story of the eastern side of octagonal shaft. I would like to say in Hindi something. मैं जब छोटा था, मेरे पेरेंट्स वहां लेके गए साइट देखने के लिए और मैं वहां की मिट्टी देख के दौड़ना चालू किया. तब it was my first step to start this place, Adalajwa. Yeah. For me, it's a very thing. Now we'll start to Adalaj. This is a top story of the wow. This I have taken from inside on the bottom of the wow. मुकेश जी टाइम ठीक है? एकदम ठीक है, ठीक है. ना ना ना, कैरी ऑन, कैरी ऑन. अभी तो 8 भी नहीं बजा है. यू हैव गॉट एनफ टाइम. अच्छा, कैरी ऑन. जब तक आप दिखाते रहेंगे हम लोग देखते रहेंगे, है ना? ये एंट्रेंस का है अडालज बाग के, तीनों साइड से एंट्री है. तो ये फर्स्ट एलिवेशन. Sometimes I make an experiment to take a different angle. Yes, yes. Very good perspective. पर्सपेक्टिव की बात है तो ऐसा है कि आई गॉन थ्रू 50 years फॉर इन इंटीरियर डिजाइन एंड Yes, yes. प्रिपेयरिंग डिजाइन्स. दैट वहाँ क्या है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. Yes, yes. मोस्ट ऑफ माय वर्क करेक्टली ऑन पर्सपेक्टिव बेस. Yes. इसीलिए तो उसका इम्पैक्ट है आपके काम पे. थैंक यू सर. ये वहां पर साल में एक दफे वहां एक फंक्शन होता है, वाटर फेस्टिवल. उस टाइम ये डेकोरेट करते हैं लाइट से. तो मैंने दिस इज माय फोटो विच आई गॉट द अवार्ड आल्सो. Now, secondly, Ambapur Wow is nearby this Adalaj Wow. There is no history about, I have not heard about this thing, but I know that it was in time of the Adalaj Wow. Same time it happened to be Ambapur Wow.
हाँ, एक बात मैं भूल गया अडालज की वाव के हिस्ट्री के लिए कि रूड़ा भाई ने अपने हस्बैंड की याद में ये वाव बनवाते थे। तो उस टाइम सुल्तान आके उन्होंने देखा कि रूड़ा भाई इज बहुत ब्यूटीफुल वुमन, ही वांटेड टू मैरी हर। तो एंड ही मेक ए प्रपोजल। अब उस सुल्तान का तो नजर ऐसा था, तो इसके लिए उसने बोला कि लेट मी कंप्लीट माय स्टेप वेल। तो सुल्तान ने उसे अपना फौज लगा के फटाफट काम करवा के, स्पीडी काम करवा के कंप्लीट करवाया। तो फिर उसने प्रपोजल किया कि अब निकाह कब पढ़ने का है। तो निकाह, एक बाजू निकाह की तैयारी हो रही थी और दूसरी बाजू बूढ़ा भाई ने ऊपर से जंप लगा के जोहर किया। दिस वॉज द हिस्ट्री। दिस इज अंबापुर वाव। उसमें भी अंबापुर वाव में भी एक थोड़ा मैं कहूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम फोटोग्राफ करने गया तो इट वाज अ डंप ऑफ दिस कोकोनट्स ऑन ऑल दिस थिंग। Okay. Because on the front there is a temple of this thing. They all कूड़ा कचरा इसमें डालते थे। तो मैंने वहां के दो चार लोग को बुलाया और कहा कि भी ये वाव को साफ करने का कितना खर्च लगेगा, आई विल पे। तो उसने बोला इट्स द सेम फॉर अस के 2 दिन के बाद आप आइए, इट विल बी क्लीन। आई ऑफर्ड द मनी बट दे रिफ्यूज एंड इट वाज द क्लीनेस्ट। पंचोली साहब जस्ट ए मिनट, किसी पार्टिसिपेंट ने एडवाइस किया है कि ये जो इको आ रहा है ना, अगर आप ना वॉल्यूम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इको कम हो जाएगा। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मोबाइल बंद कर देता हूँ। मोबाइल बंद कर दीजिए, ताकि इको आने से ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर। थैंक यू गौतम जी फॉर द सजेशन। ओके। हाँ अभी ठीक है। नितिन शाह जी प्लीज। अभी हाँ आवाज आती चलिए, है? हाँ अभी एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट। This it is a one part of this my book, Kumbharia Jain Temple. Kumbharia Jain Temple is a group of 5 Jain during the first one or of the 5 Chalukya dynasty. They are temples in Kumbharia, Banaskantha district in Gujarat, India, constructed from 1062 to 1231 CE, noted for their elaborate architecture. एक्चुअली क्या हुआ था कि जो राणकपुर का टेम्पल जब बना तो वो हो गया कंप्लीट। तो बाद में वो कारीगर को क्या करना चाहिए, तो कुंभार राजा ने उनको यहाँ पर लगा के थोड़ा कुछ काम करवा कर रोजी उनको दिया। दिस इज कुंभारिया टेम्पल। is a hand painted ceiling. This is all marble sculpture. Now some temple, Modera, is one of my favorite things. Sun Temple, Modera is located on the left bank of the river Pushpavati. Yes. A tributary of river Rupend in Bechraji Taluka of Mehsana district. The literal meaning of Modera is a mound of dead. Modera is sometimes called as Mundera, the original settlement of the Mod Brahmins. The Jain Acharya Hemachandra was of the Mod parentage. During the region of Solanki king Bhimdev
1063 AD, the famous Sun Temple was constructed. The cousin found stone inscribed with the Vikram Samvat 1083, which corresponded of 1026 to 1027 AD. The date of erection of temple. The place where this temple was built is mentioned in the Skand Puran as a Bhaskara Kshetra. The temple consists three separate elements. A main temple complex, including sanctum with ambulatory, lateral, transect and porch. A detached assembly hall with a toran in front, dancing hall, sabha-mandap. And the third, C, that is a large rectangle tank decorated with the numerous miniature signing. My mother's place is here, so I used to play with this. From my childhood, I have passed over here. I am taking Modera's photography last 23 years, continuous, for this thing. Every year there is a Uttarad Mahotshav by Gujarat government for 2-3 days. There is a dancing performance from different state over here. So I took every year, at least I have got a record for this 23 years for this thing. This is some temple. First this tank, first C part, that is the thing. I have made some decorative form. This is the time of festival. They are making some light arrangements. I took this thing. This is a daytime sun temple. In Solanki dynasty, they have made lot of this artwork in everywhere, most of them, in Gujarat. Nowadays in World Heritage, is considered in World Heritage. This is God's son, sun god, what Surya Dev. अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बहुत डैमेज किया था, सब ये टेम्पल्स को. वो लोग क्या करते थे कि फेस और हाथ को वो काट देते थे, बस. दैट वाज द ओनली थिंग. At the time of festival, this Uttarad Mahotsav, they are decorating like this. Some people like, some people don't like. I am doing job for this department, ASI. So I have suggested for this thing, the lighting has to be changed like that. This is a permanent, they have made permanent light like that. Okay, okay.
This is also taken at time Uttarad festival. Now Rani Ki Vav, Stepwell, Patan, is also World Heritage. For this vow, I have made documentation for World Heritage site for the department. Rani Ki Vav is located 2 kilometers to the northwest of Patan. Ancient Anavila Ward, also known as Anhilpura, Anhil Pataka, Naharwa, lies on the left bank of Saraswati River. It is about 57 kilometers from Mehsana, the district headquarters of Gujarat. The historic town of Patan was the capital of Gujarat for over 600 years between the 8th and 14th century. Under the region of Bhimdev, AD 1020 to 163, is son of Kamdev and grandson of Siddharaj. Anhilwada attained its greatest splendor and the Solanki dominion on the widest extent and highest prosperity. They are mainly remains of structure in from the temples, tomb, well, tankers. Rani Ki Vav, the most magnificent stepwell in Gujarat, is said to have been constructed by Udaymati to consort of Bhimdev of Solanki dynasty. It is just beside the ancient fortification wall, not far from the embankment and of the Sahasraling Talao, was executed under the command of Siddharaj Jai Singha in 18th to 12th century. In Gujarat, people must visit this stepwell. It's a paradise for photographer also. I paid 600 photos for the department. This statue is known as Vish Kanya. In पहले के जमाने में क्या था कि लोग ये विष कन्या को पहले वो अपना स्नेक से बाइट करवा के अपने में पॉइजन्स करवा के इस तरह वो एनिमीज की छाव में वो जाके वो लोग इस तरह से यूज करते थे. This is from inside well. It's a 7-story step well. Kalki avatar. All these avatars, like this, Kalki avatar, Ruh avatar, सब वहां पर लगे हुए हैं. This is Nag Kanya, Vish Kanya. This is a pattern using in Patan Patola. Is known famous saris of Patan Patola, known as Patan Patola. It takes more. It costs more than 3 lakhs to upwards, and for preparing this, they took at least 4 to 6 months, and they used this pattern in this Patan Patola.
This is a statue of Rama's. Says Vishnu Avatar. In Ahmedabad metro cities, most of stations, they have used my images. बल्कि होता This I have taken with the fish eye lens. Once there was a festival, and at that time they have decorated in this step well, so I took opportunity to click there. Polo heritage site now, another one. There was a town established by the Parihar kings of Idar around the Harnav river, probably in the 10th century. It was conquered by Rathors of Marwa in the 15th century and came under Idar state. The town was located between two hills, Kalyalio and Makareshi, which blocks the sunlight for the most days, which probably resulted in abandonment of the town. In this visit, Anil Risal Singh Saab was with us. This is a Jain temple over there. Samraji temple. Temple of Samraji stand on the bank of the river Mesho in veneration of Vishnu. The river Meso meandered over its rocky bed and valley immediately below, and the waters of splendid natural lake of great beauty sparkling amid the well-wood hills. Is a famous temple of Vishnu. Now Sidhpur, district Mehsana. The Bohra settlement of Sidhpur displays as a distinctive architectural patio and global character born out of the confluence of influence of various architectural styles of worldwide. Founded by the Solanki ruler Siddharaj Jayasingh in this 10th century on the bank river of Saraswati, Sidhpur is essentially a holy place for Hindu. It was only in 19th century that the Dawoodi Bohras, an influent and Muslim trading community, fan out and settled in Sidhpur, Kapadwanj around and port of Khambat. These Dawoodi Bohras carried out wealthy trade with the European countries and greatly borrowed from the European architecture style of the time while building in their own houses. वो उनके पूरी इन्फ्लुएंस में थे और इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. दिस इज स्ट्रीट ऑफ
This is no Rudramal. This is built by Siddharaj. Taranga Jain Temple. Dinesh Pancholi, a webinar. Heritage Vadnagar. Vadnagar is the birthplace of our Prime Minister Narendra Bhai Modi. Okay. Vadnagar was the famous all over India as the cultural city of Guriar land. The heritage of many eras of past buried and underground of the land. The city where Chinese pilgrims visited to study Buddhism. So the first reading of Kalpa Sutra and Agama text of Jainism. The music of Tana Riri is the tinkling of sculpture still echoes in land of artists. The city was known as the golden wing of Gujarat during the medieval era. The twin pylon symbol of Gujarat's identity, Sarmista Lake, Hatkeshwar Temple, Buddhist Vihar, Haveli, House of Adon with the Kastang, narrow roads enclosing with a veil of many temples and bazaars give an overview over cultural heritage. Vadnagar was found in 144 King Kanakshandi. Based of speculation, it is also believed that Chandragupta first may have created established of this town. This is a Hatkeshwar temple site. This is Hatkeshwar temple. This is famous for these Nagar Brahmins. The Buddha Vihar. Recently they have explored this thing. This is Tana Riri. Tana Riri is when Tansen got तानसेन को जब उन्होंने मल्हार राग गा के ताना रीरी ने राग उसको रिलीज किया था तो दैट वाज फेमस फॉर दिस ताना रीरी. दिस इज तोरण ऑफ दिस वडनगर फेमस. Now we'll go to Rajasthan. First of all, Samod Palace. This is 60 kilometers from Jaipur. Then I got an opportunity to click there. All wall and ceilings are painted in fresco painting. This is Samod Haveli. It is in Jaipur. Totally hand painted all over the ceiling and walls and all this.
Now we'll go to Legacy of Shekhawati Havelis. This is my second coffee table book I have published. That given very good response from Rajasthan and all this. शेखावटी हवेली ओपन आर्ट इज नोन एन ओपन आर्ट गैलरी. मेरा पर्पज यही था कि लोग यहाँ कर ये गैलरीज मतलब ये यहाँ की हवेलीज को देखें, और लोगों को कई लोगों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि इतनी अच्छी आर्ट, फ्रेस्को आर्ट जो यहाँ पर है. और देयर आर मोर देन 350 हवेलीज इन माय लिस्ट. I have captured some of them. To save these havelis, we must visit. Once, resident of Kachwa, Rajput chieftains and the affluent Marwaris merchant community, Shekhawati has and long been a much unexplored land and abound in rich culture, tradition, in architecture, heritage, renowned as world's largest open air art gallery for the fine fresco haveli and palaces. Shekhawati truly epitomizes architectural splendor. But today Shekhawati lies mostly dilapidation and desolation. Welcome to an exhibit journey through the enchanting DM of Shekhawati, where history, art, and architecture converge to create a tapestry of unparalleled beauty in this meticulous curator volume. We invite you to delve into the replenishment world of Shekhawati's painted Haveli, where every stroke of paint narrates a story of affluence, heritage, and artistic finesse. मेरा पूरा मकसद ये है कि लोग यहाँ कर आके देखें, तो अभी ये और पूरा उसको हवेली को पहचाने. इसका ज्यादातर हिस्ट्री, it was on this area, it was on previously on Silk Route, so it was developed like that. This is the ceiling of Mandava Palace. This abandoned Havelis. This is Mandava Palace. This is a Chhatri, known as Chhatris, Odar Chhatri. On the last moment, they have buried over here, the body has been buried over here. This is from inside. All Ramayana stories over here. This Haveli of Podar, it's at Navalgarh.
they have donated as a museum. The people can see and come over here and at that time they have to educate the people, to know the people, to what is trend. So they send this artist to Calcutta and Bombay and draw this train and all these things over. So the people know if there is some transportation like this. This is Navalgarh's Podar Haveli, courtyard. This is all abandoned Havelis. This is Bharadwaj Haveli. This Haveli is taken by a French lady and she developed as a to preserve this thing. She made a hotel over here. So that's why all these Havelis are nowadays making this hotel and so they preserve it. When I took these photos before 6-7 years, before 2 years, the whole ground floor was filled up with the water, rainwater. So they have damaged so many things. Recently, I have taken photos and so I can compare how much damage was done. A French lady ने ये एरिया को फेमस किया, शेखावटी पीपल, उन्होंने वो फ्रेंच लेडी थी तो पब्लिश वहां पर प्रदेश में बहुत फेमस की पब्लिसिटी किया और लोग अभी यहाँ you will surprised to know most of visitors are foreigners. Very sad part, we are not taking interest on this thing. When I kept a solo exhibition at Jaipur of this Havelis, so many people, they ask, we are staying in Jaipur and even though we have not seen this. All frescoes work. Or these paintings made by natural colors at that time. This is a private house. You are calling is currently busy. Please call again it out pieces of connect. Inside this Haveli. In short, मैं हिस्ट्री कहूँ कि 1920 में पूरे हिंदुस्तान में there were 32 Lakpatis. Out of 32, 28 Lakpatis from these areas. Yes, I know, I agree.
Very true. Now this Haveli is converted in hotel. This is Vimana Hotel. They have Mr. Atul Khanna. He has made lot of efforts to save these Havelis. He had in Navalgarh, one Haveli is Navalgarh, one is Ajitgarh, one is in Ramgarh. Here they made a museum. This is known as Sone Ki Dukan, means goldsmith, the shop. I have ever seen such a beautiful paintings anywhere. एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर जो अवेलेबल लाइट है उसमें ही आपको शूट करना है, तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत भी आती है. वहां ट्राइपॉड अलाउड नहीं होगा पंचोली साहब? पंचोली साहब, दिनेश पंचोली साहब, Puri Ajitgarh Haveli. This is taken by Vivana. hello. This is Ramayan, known as Ramayan Chhatri at Ramgarh. पूरे रामायण उसमें दिखाई है. This is a Podar Haveli from Ramgarh. This is Mandava Heritage Haveli. It convert in hotel. This is also Churi Ajitgarh Haveli. Okay, thank you very much. ओह This is my वंडरफुल वंडरफुल. ये पंचोली साहब, एक आध क्वेश्चन है आपसे. हेलो, आप शेयरिंग स्टॉप कीजिए. प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. आपके टॉप में होगा, डेस्कटॉप में एकदम टॉप 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 में होगा लिखा हुआ स्टॉप शेयरिंग. पंचोली साहब, यू आर, आई थिंक योर स्पीकर इज ऑफ और व्हाट? मैं जरा आवाज सुन नहीं सकता हूँ. एक
प्लीज। ओ इसीलिए तो हम बोल आप गाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपके एक बार आवाज ऑन कीजिए अपना स्पीकर। आपके डेस्कटॉप में ऊपर में लिखा होगा स्टॉप शेयरिंग। ऊपर लिखा होगा डेस्कटॉप में स्टॉप शेयरिंग। Recording in progress. हेलो। हाँ पंचोली साहब। हाँ पंचोली साहब मुकेश बोल रहा हूँ। ये आपके हाँ डेस्कटॉप बोलिए। में टॉप में लिखा होगा स्टॉप शेयरिंग। उसको क्लिक कीजिए। हाँ ये ना। ये जो आपका जूम के आपको आप देखिए कहाँ पे लिखा है स्टॉप शेयरिंग, वहां पे क्लिक कीजिए। एकदम टॉप में होगा। आप माउस कर्सर को ऊपर लेके आइए। ऊपर लेके आइए और ऊपर। हाँ यस, डन 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 डन। यस पंचोली साहब, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मजा आ गया। अरे हम मैंने अपना थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सिखौटे पंचोली साहब, सबसे हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जो आपने कहा ना कि फॉरेनर्स विजिट करते हैं ज्यादा सिखौटी में और इंडियंस कम जाते हैं। उसमें से कल्प्रिट मैं खुद भी हूँ। सिखौटी में ही हमने नौकरी किया 25 साल। हाँ खेत्री, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है ना। हाँ। और वहां से हर जितनी हवेली आप बोल रहे हैं हार्डली विद इन 1 आवर टाइम, ठीक है ना। लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट वंस यू कम टू इंडस्ट्री। तो अब हम दोबारा फिर जाके वहां पे विजिट करेंगे। सेकेंड थिंग आपसे पूछना था कि एआई से जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने तो ट्राइपॉड यूज करना बैन कर दिया है। तो जहां पे आपका लो लाइट था वहां पे सारा आपने हैंड हेल्ड कैमरे से लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये हवेलीज में इज अलाउड। अलाउड, ओके ओके ओके। मैंने कहीं पर ट्राइपॉड यूज किया है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि अभी तो क्या है कि जो भी हवेली या मॉन्यूमेंट्स एएसआई के अंडर में आ गया वहां पे ट्राइपॉड इज नॉट परमिटेड। इफ यू वांट टू यूज ट्राइपॉड देन यू हैव टू पे वेरी हेवी। No, I have advantage because I am doing job for this ASI. ओ हो, तब तो आपको एवरीथिंग इज परमिटेड, फाइन, वंडरफुल। So please ask any question and answer is open forum for everyone. Feel free to ask. कपूर साहब आप होल्ड कीजिए, आपको लास्ट में देंगे मौका क्योंकि आपसे वोट ऑफ थैंक्स भी करवाना है। हम मालूम है कि आप अंदर से आपको उबाल आ रहा है बोलने के लिए, लेकिन आपको देंगे मौका। यस, हेलो सर। या प्लीज। मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस बताना है। हाँ बोलो बोलो, फील फ्री। एवरीवन इज ओपन टू ऑल। पहले तो थैंक यू आपको, इतना अच्छा मौका मिला। मैं तब से सोच रही थी दिमाग में कि अगर मैं इसे ज्वाइन नहीं करती तो मेरे से बहुत कुछ छूट जाता आज। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सर आर्किटेक्चर थे और मेरा भी पैशन था कि हाँ मुझे आर्किटेक्चर बनना है, लेकिन उस समय उतने संसाधन नहीं थे या इंटरनेट नहीं था जिससे मैं पता कर सकूं कि कैसे क्या है, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने वो। और वन डिजाइनिंग, वन फैशन डिजाइन। सेकंड, वन सेकंड। कैसे? मुझे भी आर्किटेक्ट था ना, आर्किटेक्ट होना था, मुझे एडमिशन भी मिल रहा था, पर ड्यू टू माय फैमिली सराउंड मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने बीकॉम करके फिर भी आर्किटेक्चर काम किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ड्यू टू फैमिली मैंने भी फिर से कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। और थोड़ा वो होता है ना कि हम थोड़ा विलेज से आए हैं तो इतना एक्सपोजर नहीं है, ये वो थोड़ा वो, खैर वो सब तो बात अलग है।
तो मुझे लगा कि किसी ने सच कहा है कि किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे कायनात मिला देती है। तो आज मुझे कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि मुझे म्यूजियम घूमना, हेरिटेज हवेली घूमना और हेरिटेज चीजों को देखना बहुत पसंद है। लोगों को वाइल्ड लाइफ जर्नी देखना या सफारी करना पसंद है, उससे ज्यादा मुझे इस तरह की हेरिटेज चीजें देखना पसंद है, क्योंकि मैं डिटेल्स में देखती हूँ उस चीजों को कि कैसे कार्विंग है, क्या कलर यूज हुआ है। तो मुझे फील हो रहा था कि जैसे कि मैं बहुत जल्द ही अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ, उसी के प्रोसेस में हूँ अभी। तो उसके लिए मुझे बहुत दिन से मैं सोच रही थी क्या डिजाइन, क्योंकि सारी डिजाइन ऑलरेडी मौजूद है और मैं कोई एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर तो हूँ नहीं कि मैंने कोर्स किया है या मैं घूमी हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लूँ ताकि कुछ नया प्रिंट्स वगैरह आ सके। तो मैंने सर की इतनी सारी जो भी देखी फोटोग्राफी, उससे मुझे आइडिया लगा कि आई शुड विजिट गुजरात और राजस्थान एटलीस्ट मैनी टाइम्स। और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगी कि मेरे घूमने के बकेट लिस्ट में ये दोनों जगह अब मैंने शामिल कर दी है कि हाँ मुझे ये घूमना है और बहुत इत्मीनान से एक चीज को देखूंगी अब। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंटरनेट पे कितना देख सकते हैं एक बार में, लेकिन मेरी खुश नसीबी है कि आज शाम को मैंने इतनी सारी चीज एक साथ देखी है। ठीक है, तो मुझे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा कि मैंने क्या क्या देखा है। बस मेरा जो फील्ड है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो मुझे याद रह गया। जो भी आपने, जैसे कि आपने बोला कि रामायणा वहां पे इंट्रोड्यूस हो रखा है, और फिर जो वो उस पेंटिंग का तो मुझे पैटर्न का नाम नहीं पता, जैसे मोरक्को पेंटिंग टाइप से जो ब्लू कलर से बना हुआ है। फिर आपने कहा कि इस तरीके से मतलब, फिर आपने बताया कि आपने एक हवेली को साफ भी करवाया। तो ये सारी चीज देखकर मुझे बहुत मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है। और मेरे आज के इस एक एक्सपीरियंस में ये भी जुड़ गया कि हाँ मैंने कभी कुछ ऐसा देखा था और कभी ऐसा कोई वेबिनार ज्वाइन किया है। वेबिनार मैंने ज्वाइन किया है लेकिन एज एजुकेशन फील्ड के लिए कि कैसे पढ़ना है क्या है नहीं, लेकिन अपना फील्ड और इंटरेस्ट आज मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। और आई मस्ट विजिट। और थैंक यू सर, बोथ ऑफ यू, मुकेश सर और दिनेश सर, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैंने ये सारी चीजों को देखा। मेरा वर्क ऑफ फील्ड ना फोटोग्राफी है ना आर्किटेक्चर, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पैटर्न डिजाइन पसंद है। और मैं पोजिंग कर सकती हूँ, लेकिन फोटोग्राफी में मेरा हाथ तंग है। मुझे नहीं पता कैसे फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, लेकिन मुझे फोटोग्राफ्स और आर्टिस्ट और उनके आर्ट को देखना बहुत पसंद है। तो फिर से मैं बोलूंगी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मैंने ये सारी चीजें एक साथ देखी है, क्योंकि एक साथ कोई भी नहीं देख सकता है। चलो दीपिंदी, थैंक यू सो मच सर। दीपिंदी, हम तुमको दिनेश पंचोली जी का मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, है ना। ओके गुजरात जब भी जाना हो इनसे करना कांटेक्ट, और राजस्थान जब भी जाना हो तो हमसे करना कांटेक्ट। मेरा ओके नंबर तुम्हारे पास है ही, ठीक है ना। और जब ओके एक सेकंड, हाँ, यस। हाँ, और जब भी शेखावटी के बाजू कहीं लोगों किसी को जाना है, आई विल गिव यू फुल पूरा सपोर्ट करूंगा। और कहाँ रुकने का, कहाँ कैसे, एटलीस्ट यू मेक ए प्रोग्राम फॉर 6 to 8 days, तभी ये आप काम कर सकते हैं। काम कर और पाएंगे, यस पेशेंस, और यस। पूरे पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो चिंता नहीं करो, अजमेर में मेरा घर है, तुम और अमित वहां जाके रहो, वहां पे एक कार कार भी रखा हुआ है, कार और आराम से आप घूमो। ठीक है। अच्छा, ये पंचोली साहब एक चीज पूछना था आपसे, ये जो आपने रामगढ़ का जो हवेली दिखाया, हाँ, वो क्या जो जैसलमेर के पास जो बॉर्डर एरिया में, वही रामगढ़ क्या? नहीं, रामगढ़ फतेहपुरा के पास है। ओके ओके ओके, क्योंकि एक रामगढ़ वहां भी है वेस्टर्न बॉर्डर पे। अच्छा, दूसरा मैं एक बात कहूँ जी। कि रामगढ़ में एक शनि मंदिर है, शनि हाँ, देव का, ओके। वो हमने देखा। मैं अभी मेरी नेक्स्ट विजिट में मेरा प्रोग्राम है 3 दिन वहां जाके, वहां भी मिरर वर्क बहुत है, तो यस, वो मिरर वर्क हम सब साफ करवाएंगे, फिर देन ओके। आई विल टेक फोटोग्राफ, दैट इज अ फिक्स।
तो ये अजमेर से कितना दूर है? वहां पर ये मंडावा से करीबन 25 किलोमीटर। इज इट नियर उदयपुर और जोधपुर और कोटा, कहाँ पे? ये जयपुर से जनरली सीकर होके जाना पड़ता है। ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है, तो जब भी आप प्रणाम करेंगे आप बोलिएगा, हम आ जाएंगे। ठीक है, जरूर जरूर, आपका आपके साथ हो जाएंगे आपका। माय फेवरेट डेस्टिनेशन। यस यस, डन। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? I had a few questions and I Yeah, please. already put it on writing in the Okay, comment fine. section. Okay. So, should I read it out or it could be followed better, from the better, whatever I have written? Okay. better you ask the question, है ना? Much better. Okay, actually, I have lots of questions, out of which a few have already been answered. My question was about the copyright of the images, as Pancholi sir has taken images from ASI protected monuments as well as images from a few properties which are being kept in private. That is, those which are private properties. Yes. So, as far as using the images in your book is concerned, whether there was any copyright issue or it wasn't there? No, for this heritage site of Gujarat, I have taken a permission from AIC department to publish a book. Okay. Okay, that's fine. Okay. This Okay. private Okay. Havelis, no question. Mhm. Okay. 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 Now you should And take permission of AIC. is it being Before taken from publish. the? Is it being taken from the superintending archaeologist or it's from director level? Director level. गौतम जी, I will say something about your doubt. क्या है कि कहीं भी, चाहे वो ASI का मॉन्यूमेंट हो, कोई भी हो, हेरिटेज हो, अगर वहां पे फोटोग्राफी अलाउड है, then you do not need to go for a copyright permission from anybody. Okay, because once photography is permitted, you have the copyright of your clicked images. There is no issue of any copyright permission. Okay, जो पंचोली साहब ने काम किया, ये तो पूरा गवर्नमेंट का परमिशन लेके ही गवर्नमेंट के लिए भी काम किया. बेसिकली ही हैज वर्क फॉर गुजरात गवर्नमेंट एंड राजस्थान गवर्नमेंट आल्सो. बट जहां भी आपको कैमरा अलाउड है, फोटोग्राफर तो अलाउड होगा ही, कैमरा अलाउड है, तो आप वहां पे कोई भी फोटोग्राफ क्लिक कीजिएगा, उसके लिए कॉपीराइट इज नॉट एट ऑल एन इशू. ओके गौतम जी? Okay. Okay, fine. Any more questions from anyone? हमारे yeah. I have one question. Yeah, please. I was in the car, so I could not listen to, but he belongs to Ahmedabad. आप कार में थे, ये हमको मालूम पड़ गया था, इसीलिए आपको म्यूट कर रहे थे. नहीं, मगर दिनेश वो पंचोली साहब हमारे अहमदाबाद के हैं. हाँ, मालूम है. He is one of the mentors for me. Okay. So I have a long relation with him. Okay. And I know that how much pain he takes to produce something, you know. I learned one thing from him, that the age is not just a number. Age is nothing to do with your enthusiasm, you know. हाँ, definitely. और मैं थक जाता हूँ कभी कभी वो कोई एग्जीबिशन अटेंड करने में, कोई फोटोग्राफी एग्जीबिशन अटेंड करने में, मगर ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड आई लव दैट क्राइटेरिया मींस इज एंथुसियाज्म. और ये फोटोग्राफी और उनकी जो बुक, आई एम वन ऑफ फॉर्चुनेट वन टू हैव हिज ऑटोग्राफ बुक विद मी. So, but I wish that he will continue more and more, and we are going to see his more work. Thank you. Very good. Well said. और कोई? हाँ जी, I have a question. Yeah, please carry on. First of all, great work, Dinesh bhai. अपना वीडियो, कृति मैडम अपना वीडियो ऑन करो ताकि मालूम पड़े कौन क्वेश्चन पूछ रहा है. हाँ जी. Now you are visible.
Okay, okay. So thank you so much, first of all, to get Dinesh Bhai on this platform and have all of us attend his presentation. So thank you, DCC, for that. And great work, दिनेश भाई, बहुत बहुत मस्त थे। मैंने मुझे पहली बार देखने को मिला, लेकिन मैं आपसे मिली थी थोड़े दिन पहले, तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे ये लिंक भेजा, वरना मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया होता आज। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो जब आप वाइड एंगल यूज करते हो स्पेशली आर्किटेक्चर में, तो जो डिस्टॉर्शन होता है वाइड एंगल की वजह से, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, मैं ये टेमरोन का लेंस यूज करता हूँ 15-30, उसमें रिस्टोरेशन बहुत कम है ही नहीं, समझो। दैट्स व्हाई आई परचेज दैट थिंग। ओके, ओके। Kirti, I will guide you something about distortion. If you are using a fisheye lens, then Yeah. once you download in the Adobe Camera Raw, there is an option of optics where you can adjust the distortion as Yes. per your, है ना, as per your liking. Okay. So, हाँ जी। but there are few lenses which are very wide angle, like 11-16 of Tokina, Yeah. that already distortion controlled. Like in Tokina Okay. 11-16, there is hardly any distortion. Okay, where Okay. in a Okay. fisheye lens around 10 millimeter, 10 to 17 and all, there you will get distortion. But in Adobe Camera Raw, you can very well control it almost around 80%. Okay. Okay. Again, I will tell you, in monuments and architecture, you cannot be so creative because you have Yeah. to maintain that actual condition of the monuments. But in case of fashion, if you use this fisheye lens, you can get amazing creative pictures. And fisheye lens is my very favorite lens. That is Tokina 1017. I am using it for last 20 years. Okay. Yes. Okay, fine. Right. Yeah. Thank you so much. Okay. Yes, कपूर साहब, ये आपकी बारी है। हमको आपसे मेरा एक सवाल है, कौसानी में कभी हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनने का मौका मिलता है क्या? है कि हमने जब भी आपको देखा है, चाहे जनवरी हो, दिसंबर हो या अप्रैल मई जून हो, हमेशा ये जैकेट में रहते हैं। नहीं, जैकेट साइज इसलिए जरूरी है कि आज शाम बहुत ठंडा था यहाँ पर और ठंड लग रही थी। दिन में गर्म भी था, लेकिन शाम को ठंड काफी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिस्क नहीं लिया जाए, क्योंकि मुझे इसके बाद अभी पीएससी की एक जजिंग है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। वेरी गुड। आज तो पोर्ट्रेट की है, नेक्स्ट वीक मेरा लैंडस्केप फोटोग्राफी पे मेरी जजिंग करनी है, तो वो साढ़े 9 बजे शुरू होगी और रात को 11 बजे खत्म होगी, तो अपने प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है। वेरी गुड। आप लोग गर्म प्लेस पे रहते हैं इसलिए ठंडे छोटे कपड़े पहनते हैं, हमको तो साल भर पहनना ही पड़ता है। नहीं, एक आपको बेनिफिट है कि ठंड हमेशा रहती है ना, तो नहाना कम पड़ता है। नहीं, नहाना वो नहीं करते, नहाने का हमें 2 बार नहाना पड़ता है, 2 बार नहाते हैं, मजा आता है उसमें। चलिए ठीक है। हमारे हर रूम में गीजर। Say something and give vote of thanks. थैंक यू मुकेश जी और धनबाद कैमरा क्लब के सभी मेंबर। आज मैं कुछ दिनों बाद इस एक बीच में आपकी एक वेबिनार मिस कर गया था, क्योंकि मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैं लखनऊ में था उसके ऑपरेशन के लिए, और कुछ समय पहले मैं यूएस में था 2 महीने, तो इसलिए वो भी कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज बहुत मजा आया। दिनेश पंचोली जी मेरे पुराने मित्रों में से हैं और हम लोगों ने खूब साथ साथ बहुत सालों से फोटोग्राफी की है। आपका वर्क मैंने पहले भी बहुत देखा था, लेकिन आज आपने जिस डिटेल्स उस वर्क को दिखाया, सुन के बहुत मजा आया। इसके लिए मैं धनबाद कैमरा क्लब को बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छे आर्टिस्ट को पकड़ा और उनके काम को हम सब लोग देख पा रहे हैं, और आपने कई यंगस्टर को गाइड भी किया इस बारे में। ये एक बहुत अच्छी बात है। पंचोली जी, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, आशा करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। मुकेश जी, कीप इट अप। आपकी एनर्जी को सलाम हमेशा, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो रिटायरमेंट के बाद भी इतना एक्टिव है, देख के बहुत मजा आता है। आपके जितने काम आप कर रहे हैं, जितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जितनी अभी मैंने आपकी जो वर्कशॉप थी दूसरी जो
होली वाली। आज दिन में मुझे एक जजिंग करनी पड़ी नैनीताल की। नैनीताल में होली फेस्टिवल के ऊपर उनका एग्जीबिशन, एक कॉन्टेस्ट था, तो उसकी जजिंग कर रहा था। मुझे आपकी याद आ रही थी कि आपने जिस ढंग से फोटोग्राफर्स को बताया। अनूप शाह जी मुझसे कह रहे थे कि साहब नहीं, ये मत करिए, आपको काफी फोटोग्राफ रिजेक्ट कर दिया, लोग अच्छे फोटो नहीं खींचे। मैंने कहा आपने एक अच्छी वर्कशॉप ही नहीं कराई मुकेश जी की तरह, अगर आप कराते तो शायद लोग और अच्छे फोटो खींचते। तो थैंक आपके यू। मोटिवेशन से धन्यवाद। और उसके साथ के जितने लोग हैं खूब एंजॉय करते हैं। मैं आपको, पंचोली साहब को, पूरी धनबाद कैमरा क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको इतने सुंदर वेबिनार से मिलाया और हमको इतने सुंदर हवेलियाँ जो आप भी नहीं देख पाए थे, जिनको हम देख पाए। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं पंचोली जी। आपका इंतजार करूंगा कि आप कभी कौसानी दोबारा आइए कभी एक बार। और मुकेश जी आप भी इस बार प्लान करिए, कुछ करते हैं यहाँ पर फैशन के ऊपर। मैं सोचता हूँ हाँ इस हाँ, आएंगे आएंगे। फ्रेंड्स, लेट मी टेल अबाउट कपूर साहब. ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, and he is basically a banker. He retired from the State Bank of India, but he has got a wonder. He has got a wonderful resort in Kausani, and I have stayed there more than 4 or 5 times. I don't remember, but it is a wonderful place. आप अपने घर की खिड़की से बैठे बैठे मोबाइल से माउंटेन, स्नो पिक्ड माउंटेन का फोटो ले सकते हैं। अगर अगर आप छत पे चले जाए तो फिर तो पूरी दुनिया आपके सामने है। 180 डिग्री में आप माउंटेन देखेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो अरेंजमेंट है, रूम की बात तो छोड़ दीजिए। रूम, हर हर होटल में रूम अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। मेन है फूड। फूड इज वंडरफुल, a very homely food, and the way he maintains the neat and clean environment in the whole around the resort is wonderful. So anybody interested, he can contact हमारे कपूर साहब को, और इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं कौसानी नरेश। नहीं कौसानी, और हम आपको धन्यवाद नरेश बोलते हैं इसीलिए। थैंक यू बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या है कि देखिए, आप नहीं लास्ट टाइम आए थे ना, तो हमको बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। यूएस में था हम दिनों, तो और दूसरे पे आग का ऑपरेशन था दोनों, उसके बाद तो आज हमने सोचा कि आपको हम फोन करें, तो लेकिन हमने फोन नहीं किया कि टेस्ट करेंगे आज कि दोस्ती कितनी बरकरार है हमें। तो वो टेस्ट पूरा हो गया, है ना। थैंक यू एवरीवन एंड फ्रेंड्स। हम आप सबको बोलेंगे कि जो अगला वेबिनार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो बहुत ही यूनिक है। ये इसके बारे में हम 3 महीने पहले से सोचते आ रहे हैं। फिर बाद में हमने अपने एडवाइजर वगैरह से कंसल्ट किया। कंसल्ट करके फिर हमने एक जो मेंबर्स को सिलेक्ट किया अक्रॉस द ग्लोब। तो 4 लोगों को लेके हम लोग करेंगे एआई पे ग्रुप डिस्कशन, एंड इट विल बी डेफिनेटली फैंटास्टिक। उसमें से एक जो पैनलिस्ट है वो खुद एआई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो we'll meet again in the month of June. Till then, I think goodbye. पंचोली साहब, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि ये हमने ही पहल किया था, इनको रिक्वेस्ट किया। पंचोली साहब ने हमको अपनी हेरिटेज की किताब गिफ्ट किया। तो आने के बाद में हमने देखा, पन्नों को पलट के पढ़ा भी, तो लगा कि ही इज द राइट मैन टू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन हेरिटेज एंड ऑल। So I requested him and he accepted it. I am thankful to him. And अभी और भी मौका मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। आपका लेह लद्दाख का भी चैप्टर बाकी है। यस, आपका हमने देखा है फोटोग्राफ, बहुत बढ़िया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। हाँ, लद्दाख पे अभी कॉफी टेबल बुक बनाई। हाँ बनाइए। तो नहीं किया, वो कंप्लीट कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग आने वाले समय में कुछ वैसा भी करेंगे, लैंडस्केप टाइप का करेंगे। आपके पास तो कौसानी का भी प्रोग्राम बहुत सारा होगा हाँ बहुत से बहुत ना। फ्रेंड्स, कौसानी का जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, माउंटेन तो है ही, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग का जो वहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर्स मिलते हैं, वो बहुत कम जगहों पे मिलेगा। और जगहों पे है, पहाड़ में तो स्टेप फार्मिंग होती है, लेकिन वहाँ जो एक क्या ना, बिजोरिया, बिजोरिया इज सो फेमस फॉर स्टेप फार्मिंग। मजा आता है।
अच्छा Okay, आप then. सब लोग आइए एक बार दोबारा। आएंगे। थैंक यू सर। Okay, then good night to everybody. थैंक यू पंचोली साहब, थैंक And यू। Dipinti, thank you Thank very you, sir. much. Thank you. Dipinti, thank you very much. Sir, Okay, thank you. thank you. हमको ये मालूम था कि this webinar will be useful for you because you know I am a mentor also. So I can read between the lines. So I requested you and you performed very well. I am very happy. Thank you. थैंक यू सर, थैंक Good night. यू। Good night, everyone. शुभ